Hello and welcome to this special presentation which we are bringing you from Patna, Bihar. The spotlight for the last 1 week has been on the condition and the preparedness of the Nitish Kumar government to deal with the COVID crisis. And if you think the title of this show, COVID Hell, is exaggeration, you will have to be here to understand the complete lack of preparedness, the complete lack of empathy as far as the patients are concerned. Literally, people have been left Bhagwan Bharose. So how bad is the situation is most of the people asking me. This next story that we bring you from the NMCH hospital, the biggest COVID facility in Bihar, is a complete shocker. A patient died waiting for admission, waiting for a doctor to come and see him. Take a look. Another case of hospital apathy. These visuals are from the Nalanda Medical College and Hospital in Patna, where a patient waited for treatment outside the hospital in a car for 3 hours. Why, you ask? Because the hospital denied admission till all formalities were completed. The victim's entire family was running from pillar to post to get an admission slip. ये एक परिवार है जो पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर अस्पताल में आया हुआ है। इनको यहाँ अस्पताल में रेफ़र किया गया क्योंकि ये संदिग्ध कोरोना के मरीज़ थे और काफ़ी देर तक चक्कर काटने के बाद इनको भेजा गया कि आप पर्ची कटाइए एडमिशन के लिए। इस पूरी जद्दोजहद में बहुत देर तक कोई डॉक्टर इनको देखने नहीं आया और इन्होंने जो मरीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर उसमें सांस लेने में तकलीफ थी, उन्होंने दम तोड़ दिया है। आप इनके साथ ही आए हैं जी? तो उन्होंने ये पर्ची कटवाया आपसे? पर्ची कटवाए। हाँ। पर्ची कटवाने के लिए तो गेवे किए, तब इधर देखते हैं कि लास्ट है। हाँ। 2 दिन से कह रहे हैं कि हमको अब तब लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और दूसरी सवाल है क्या कि बेचैनी नहीं लग रहा। हाँ। रातें कहने के लिए चलो हमको पटना हम लोग 6 बजे आए हैं। हाँ। 6 बजे सारे डॉक्टर के यहाँ घूमे, सब कहन कि पहले जांच करवा करके आइए। हाँ। जांच करवाने के लिए गए तो वो भी कहन कि नहीं जांच नहीं होगा। हाँ। 3 दिन के बाद मिलेगा जांच रिपोर्ट। हाँ। हम लोग दौड़ते रह गए इन्होंने, तो लास्ट में अभी एक डॉक्टर कहन कि चल जाइए NMCH। हाँ। रेफर किए। हाँ। यहाँ आए, पुर्जा कटेते नहीं। This is not all. Once the family managed to get a slip, the doctor did not show up. आप लोग को जांच भी नहीं हो पाई अभी तक? तो घोड़े से तड़प रहे थे सब डॉक्टर, घोड़े से तड़प रहे थे, कुछ नहीं हुआ। सब डॉक्टर ही सब हो गए, तब अंत में आए। This is the condition of Patna's biggest COVID facility, where red tapeism and apathy have cost a life. It doesn't end there. The bereaved family was not given any help by the NMCH even after the patient's death. With the staff unmoved by the family's plight, our reporters stepped in to help. We are trying to get some answers. I mean, about where should he doesn't know what to do with the body now. They have come here, got a slip made, but what to do with the body is there is nobody to answer here. Absolute chaos at NMCH. The body is there in your premises, पर अभी तक उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो वापस चले जाएं, एम्बुलेंस में चले जाएं, वो कहीं पर जाके बॉडी रख दें. What should they do? उसके लिए तो देखो कि क्या उसको करना है ना. We have got our health manager to do such works, है ना. उनका हम लोग ब्रॉड डेड या में उसको हम लोग सर्टिफिकेट बनाएंगे, and then we will give a certificate to them and they can go home. But we don't know that whether it was a COVID positive or COVID negative, है ना. So all the patients are not COVID. तो सर क्या इनके लिए अभी आप कुछ कर सकते हैं? मतलब अभी इनको जो है कि हम उनका पेपर देख लेते हैं कि रियल में पॉजिटिव है या नहीं है. ही सस्पेक्टेड, अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ है तो पता नहीं चलेगा. तो अभी हम उनको टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये बता रहे हैं कि उनको बुखार था और सांस लेने में तकलीफ थी. हाँ, तो अब जब यहाँ पे आ गए हैं तो इनको हम एक टेस्ट करा लेंगे, एक रैपिड टेस्ट हम करा लेंगे, कंफर्म करके फिर उनको उस हिसाब से इनको आगे. सर बट फॉर द लास्ट कपल ऑफ आवर 2 घंटे से करीब वो बॉडी वहीं पर है, मतलब आपके हॉस्पिटल के मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक. तो क्या आप कुछ उसका वहाँ से उठने का, क्योंकि और लोगों के लिए भी रिस्क है. तो 12 बजे रात तक 2-2 बजे रात तक कर रहे हैं. जी जी. As coronavirus cases surge in Bihar, the pressure is mounting on the health infrastructure in the state, and it is showing.
With Ankit Tyagi, Bureau Report, India Today. And that heartbreaking story is not an isolated one. Not only there is an acute shortage of hospital beds, but even other infrastructure and basic facilities like oxygen cylinders are lacking in the state of Bihar. In the capital city Patna, patients are running pillar to post to try and get admission, to try and get some medical attention. 4 months of lockdown and preparations completely lost by the Nitish Kumar government. तो बार बार मैं वहाँ बोला था इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला. Vimal has come to Patna's biggest COVID dedicated hospital, the Nalanda Medical College and Hospital for Urgent Help. The suspected COVID patient has had trouble breathing and took the ambulance to hospital. But to his dismay, Vimal found the oxygen tanks in the ambulance were empty. क्या व्यवस्था है इसमें कितनी नहीं है. तो बार बार मैं वहाँ बोला था इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला. अब बताइए क्या है. His wife and father-in-law travelled in the same ambulance without any PPE kit. Unfortunately, troubles did not end there. They had to run pillar to post just to get him admitted. डीआरएम ऑफिस है, वहाँ का मेन डीएमओ है, उसको भी भेजे हैं, रेफर किए हैं. अपना पर्सनली आदमी है एकदम, तो लिया है. और आज देखिए अभी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे. वो लोग बोले कि देगा, सब देगा. हम बोले भी हैं कि एम्स में दे दीजिए, नहीं तो पारस में कर दीजिए, हम जाएंगे. लेकिन नहीं, वहाँ कहा गया कि वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं, दानापुर मंडल हॉस्पिटल में. जल्दी ले जाइए. तो आप जल्दी से ना, हम पारस में वहाँ भेज रहे हैं आपको, नालंदा एनएमसीएच में, वहाँ भर्ती लेगा. हम लोग पूछ के भेजते हैं, और यहाँ आने के बाद यही होता है. तो Overwhelmed by the sheer number of patients coming to this hospital, doctors are forced to deny admission. इमरजेंसी में 5 वैकेंट है, लेकिन स्टाफ का कहना है कि चल नहीं रहा है. वेंटिलेटर नहीं चल रहा है. चल नहीं रहा है. मतलब बेड्स हैं पर वेंटिलेटर नहीं है. वेंटिलेटर भी है. हाँ. चल नहीं रहा है. 5 जो है वो काम नहीं कर रहा है. काम नहीं कर रहा है. मेरे उसको स्टाफ ने जो बताया, पुष्टि नहीं करते. आप जाके चेक कर सकते हैं. हाँ. तो उस ग्राउंड पे हम कैसे पेशेंट को रख लें. अगर रात में पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. तो ये हम उसको समझा रहे हैं. तो अभी आप फिलहाल स्थिति में आप कोई पेशेंट लेने कोई स्थिति में नहीं है. नॉर्मल पेशेंट जो है, जो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, उसको ले सकते हैं. उसके लिए बेड खाली है नॉर्मल वार्ड में. वेंटिलेटर वाले वार्ड में बेड खाली नहीं है. What's worse, no COVID protocol seemed to apply here. One look around the hospital and every nook and corner cries a story of apathy. Hospital staff openly disregarding PPEs, putting everyone at risk, including themselves. But apathy doesn't end there. Next to Vimal, there is a body waiting to be wheeled out. भाई जहाँ पे जाके रखा है डेड बॉडी पड़ा हुआ, कल से बाहर निकालना चाहिए. और उनका बेटा जो है वहाँ पे सोया हुआ है, सवेरे से बेचारा उसे बेहोश पड़ा हुआ है. उसके पिता इनके पेशेंट के बगल में डेड पड़े हुए हैं. और उसको वहाँ से निकाल. अब वैसे में ये तो और जो पेशेंट है वो भी हरक जाएंगे. हॉस्पिटल सिर्फ नाम के लिए सब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, सिर्फ नेता लोग के लिए है. आम जनता के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आम जनता के लिए. आम जनता मर जाए, लेकिन कोई ये नहीं है. We met a young man waiting for his father's body for hours, but to no avail. बॉडी नहीं दिया है उन्होंने. मैं अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ, अभी डिस्चार्ज का प्रोसेस कराना है. कब से बीमार थे वो? बीमार बेसिकली हम पारस में थे. पारस में, पारस हॉस्पिटल. तो पॉजिटिव आने के बाद बेसिकली उन्होंने रेफर किया. तो हमें एम्स में गए, एम्स में सीट फुल था.
बेसिकली तो वहाँ से फिर हमने अभी एमसीएच में लेके आए थे। In the meantime, another ambulance rolls in to join the long queue of waiting patients. Their relatives going through the same ordeal as Vimal's family. Government hospitals in Bihar are crippling under the load, the burden of the patients of coronavirus, which are coming in big numbers despite extremely low testing in the state of Bihar. The question that a lot of people, those who are in fact almost been left to fend for themselves, are asking, is that the reason why the Nitish Kumar government was elected? Isn't this the primary responsibility of the government? As you see, these ambulance after ambulance at the Nalanda Medical College, many only being told after a wait of hours, no bed available here, take your patient somewhere else. With camera person Dinesh Ankit Tyagi in Patna, India Today. Bihar is among the least testing states when it comes to coronavirus. Just about 3,400 tests are being done for 1 million population. Despite all the efforts, for a population of more than 11 crore, the testing rate in Bihar has just reached about 10,000 tests per day. If you are in Patna, getting yourself tested is a Herculean task. And that too, if you get a test, a positive test from a private hospitals, many government hospitals will still deny you admission. Take a look at this story of a 70-year-old man waiting to be tested for the last 3 days. And he is in a critical position. Testing, tracing, and isolation. The 3 mantras for containing COVID spread. But what if we falter at the very first level? That is testing. That is what has happened in Bihar. So far, only over 3,400 people per million have been tested. Just half of its neighbor Uttar Pradesh, which itself is a laggard in testing. On the ground, this has forced people to run pillar to post just to get tested. This 70-year-old man with a severe heart condition had to wait hours in his car with oxygen support. He was tested positive by a private lab, but the test result did not grant him admission in any hospital. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए थे, हमको गवर्नमेंट होते प्राइवेट भी कोई ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है। जितने हॉस्पिटल का नॉमिनेटेड है बिहार में, पटना में कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट करेंगे, सारे हॉस्पिटल को हम फोन करके देख लिए, इमरजेंसी तो घूम के आ गए, बोले नहीं मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है और अभी सिर्फ पैसा नहीं है, जो पेपर में निकाला गलत निकाला है। पारस, रूबन और मेडिका हार्ट हॉस्पिटल, एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, पूरे 2 दिन से सर भटक रहा हूँ मैं पूरे पटने में 2 दिन से मैं भटक रहा हूँ। इसी तरह जब जाता हूँ घर पे से निकलना रहता है, ऑक्सीजन गाड़ी में सेट करता हूँ, पिताजी को लेता हूँ, उसका चल देता हूँ। काफी 2 घंटे से गाड़ी में ऑक्सीजन लगाए बैठे हुए 70 साल के बुजुर्ग आदमी हैं। तो India Today reporters intervened and managed to get this critical patient tested again at the state government's new Gardiner Road Hospital. But at the testing facility, the situation was only going from bad to worse. Long queues and a wait without any distancing. Look at the number of people and look at the social distancing and other things that have been followed. I mean, there are so many people in one spot. There is very dangerous hazard, I mean, these suits and everything that people, those who have been working here, have been disposing of. Even if you don't have corona, you might in fact get an infection coming just to get a test. A technician, the only one at the hospital, admitted that most of the staff have tested positive, leaving her alone to take the testing burden. अभी हम 90 जांच कर चुके हैं सुबह से। Yes. अच्छा। And still one list is just टेक्नीशियन में अकेले मुझे ज़्यादा टेक्नीशियन बीमार पड़ गए, यहाँ भी थे तो, और मैं खुद जांच कर हो सकता है मैंने पॉजिटिव निकली, खैर अभी तो फिट लग रही हूँ तो कर रही हूँ। One thing is clear: the Nitish Kumar government's tall claims
that the crisis is well under control is falling flat on ground. With Ankit Tyagi in Patna, Bureau Report, India Today. Helpless patients and hapless attendants. Despite getting their own oxygen cylinders, 2 COVID-positive reports from a private and a government facility, 70-year-old Mahindra Kumar still could not find a bed at All India Institute of Medical Sciences. When we asked the reason why, the medical director brazenly told us he doesn't care. Just a few hours after we helped a critically ill 70-year-old Mahindra Kumar to get tested, he was shockingly again denied admission at AIIMS Patna, which is a COVID-dedicated facility. सिचुएशन है कि यहाँ पर जिनका पैर भी हो रहा है वो उतना आकर देखें हम कि जिनका पैर भी है उनका एडमिशन हो रहा है, नॉर्मल आदमी का यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपके पिताजी अंदर हैं? अभी पिताजी को अंदर सिर्फ रखा है और उसके बाद बोल रहा है कि आप ले जाइए यहाँ से। When India Today reporters asked why Kumar was not being attended to at the hospital, nobody was ready to give any answers. No explanation was forthcoming from the hospital. By then, hours had passed and nobody was even bothered to attend to Mahindra Kumar. His desperate sons were told that no beds were available in the ICU. डॉक्टर जो देखने के बाद बोला कि इनका सिचुएशन खराब है, मेरे पास कोई बेड नहीं है, हम यहाँ नहीं रख सकते। आईसीयू पे कोई बेड नहीं है? आईसीयू में कोई बेड नहीं है। We finally got hold of a doctor at AIIMS. We appealed to him to give it in writing so that Mahindra Kumar could get admission elsewhere. सर अंकित त्यागी इस साइड मेरी अभी आपसे बात हुई थी जस्ट शॉर्ट वाइल बैक। सर मैं आपसे बस ये दोबारा पूछना चाह रहा था कि आपने सर हैव यू इंस्ट्रक्टेड देम बिकॉज अभी तक भी नोबडी इज रेडी टू गिव देम इन राइटिंग कि आप यहाँ पे ले जाइए, हमारे पास बेड नहीं है। नहीं दे देंगे, वो तो लड़के लोग उसको ऑक्सीजन लगाए होंगे ना। उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है अंदर? जी ऑक्सीजन लगा हुआ है। हाँ तो उसके लगा स्टेबल कर रहे होंगे उसको। नहीं वो बार बार उनको बोल रहे हैं कि आप इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, पर ले जाएं तो उससे पहले कम से कम कुछ लिख के तो देते ना उनको। वो कहीं और हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे भी उनको यही सुनेंगे कि आप कहां से आए हैं। नहीं लिख के दिलवाएं। Another attendant of a patient told us how he had to use political influence to get his mother admitted at AIIMS after being denied admission for days. मेरी मदर यहाँ एडमिट है और उनको मैंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराया बट वो सीट नहीं ले रहे थे, तो मैंने हायर कंसल्ट मतलब कि मंगल पांडे जी जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है बिहार के, उनसे कंसल्ट कराया गया, तब जाके मेरी मदर का यहाँ पे एडमिशन हुआ है। Again, when for hours we did not get any answer or there was no written, in fact, referral that was given by the All Indian Institute of Medical Sciences, Patna, we tried to speak to the director of the institute, Prabhat Singh, on being asked where should these patients go. Prabhat Singh flatly told us that he's not responsible for it, and when we asked then who is and what should they do, he cut the phone saying, I'm not answerable to the media. We then, once again, in order to get some answers from the medical superintendent or the director, pursued this matter further, and this is what happened. You were saying something about going to hell. Would you like to repeat that comment on camera? After running away from your responsibility, Mr. Kumar, Mr. Singh? No, I know that, but I was just asking you that you said something on the phone, so I want a reaction from you on camera. Would you like to say the same thing, repeat it on the camera? He's the medical director of All India Institute of Medical Sciences. I just spoke to him regarding a patient, and what I was told was that I'm not responsible for, in fact, answering to you. हाथ पहले हाथ में, दूसरा हाथ पीछे रखिएगा, हाथ पहले पीछे रखिएगा, कोरोना का टाइम है, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते. Now let me just try and get some answers from the others. We have to ask you questions because nobody from your hospital is answering. And if you have a problem, why don't you call up? Why don't you call up? I will not. Why don't you call up the police and throw me out? Why don't you go outside and stand near the gate? Why should I do that, ma'am? Nobody stopped me at the entrance. You should have given clear instructions not to let the media in. I came here to get some answers, which nobody from your administration seems to be. Got no by the nodal officer. Nobody has given any answers. They have clearly told you. What? All right, so we'll put this on air because this, ladies and gentlemen, tells you
how responsive the administration is to the media. If they are not responsive to the media, you can very well imagine what will be the plight of the patients, those who are admitted at this very institute, which calls itself an Institute of Excellence, which is one of the main facility as far as the COVID-19 fight in against coronavirus in Bihar, Patna is concerned. The AIIMS Hospital administration's reaction to a critically ill patient was quite unexpected. Realizing there was no hope at AIIMS, Mahendra Kumar's sons said they were leaving to try their luck in another hospital. With Ankit Tyagi in Patna, Bureau Report, India Today. Even if one unfortunately loses the battle to COVID-19 because of a careless system, the struggle doesn't end there. From getting the body to getting the final rites done, it's a Herculean task here in Patna. The electric crematorium, which is supposed to dispose of the COVID-19 bodies, is non-functioning. At the ghats, at the Shamshan Ghat, the story of complete disregard of protocols and putting everybody else at risk as well is repeated day in, day out. COVID bodies openly burned. PPEs discarded in the open. Hygiene thrown to the winds. If infections are soaring in Bihar, it comes as no surprise. India Today reporters got a first-hand account of the sorry conditions at crematoriums in the state. What we saw at Patna's COVID-dedicated Bansghat crematorium would shock anybody. Because the electric crematorium is not working, the COVID-19 bodies are in fact being burnt right behind me, as you can see, without much precaution being taken. The people, those who are working here, they don't have PPE kits, they don't even have, masks, gloves and other important equipment. The indifference of authorities to the COVID crisis was evident when we learned that the electric crematorium has been non-functional for the past 2 weeks. 14 दिन हो गया ऐसा कोरोना के बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ पे अब उन्हें खुले में जलाना पड़ रहा है लकड़ी पे ये तो पदाधिकारी सब जानेंगे ना सर हम लोग तो यहाँ कार्यरत हैं It is the same story in other crematoriums too. और भी जगह पे है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम हाँ 2 जगह और है वो भी खराब है गुलबी घाट दोनों खराब हो गया अटेंडेंट खराब हुआ ये तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ गुलबी घाट अच्छा फिर खचकल्ला है खचकल्ला भी खराब है वहाँ भी मैं जा रहा हूँ Machine बंद है. Now imagine the risk that everybody is being put in because जो शवगृह है ये काम नहीं कर रहा है और इसके अभाव में I'll tell you what is happening because this is not working. Here, take a look. COVID bodies, everybody else. This is the situation where bodies are being disposed of because the electric crematorium is not working. Absolutely in shambles, absolutely pathetic. The Nitish Kumar government has been making tall claims that COVID crisis is well under control, but this was clearly not visible on the ground. With Ankit Tyagi, Bureau Report, India Today. In the last 15 years of his rule, Nitish Kumar cultivated an image of Sushasan Babu. Sushasan meaning good governance. That is possibly, this COVID crisis was possibly the test of that Sushasan or good governance in Bihar, where Nitish Kumar, who has been absent for the last 225 days, seems to have completely failed. Not only did they miss the initial advantage of not having many COVID cases and preparing well, but at this point of time, the government is unresponsive and still chasing behind the COVID curve. So if you are in Patna or in Bihar, our only advice would be, please make sure that you stay safe, do everything to save yourself from the COVID virus. Otherwise, the system could fatally let you down. That's all the time that we have in this special coverage. Thank you so much for tuning in. News and updates will continue on India Today.